comes back to again the physiochemical properties of the drug. What are the physiochemical properties of the drug? So if you look at, just out of curiosity, let's say if you take any class of drugs, you look at the drugs, I mean, you can go on FDA site, or there are so many reviews now. Just if you just Google and you put chemical structures of cancer drugs, you'll get a whole chart. Look at, as a chemist, look at those structures. There are lengthy single chain, there are very complex natural products, there are compounds which are many the chiral centers, there are compounds which are ADC, antibody drug conjugate, small molecule and antibody, they are put together. So there are varieties of these. How the drug is administered, orally, dermally, through IV, and once it is done, how it gets absorbed. It has to first absorb to be distributed, right? So uska absorption process kya hoga? Just whether it's a passive diffusion or active diffusion, it is through endocytosis, if it is coming through, how is drug? Usko sirf samajhna. That's why I mentioned each one of these ADME is a huge field by itself. And the advantage, yesterday and before yesterday, people asked me, how is it that you are a chemist and you are doing all this disease biology, cancer biology, but now you see, because you just follow the properties. You just follow the properties and just a little slow by, try to look from your chemistry lens. Try to look at these things from your chemistry lens. You will see, before you know, एकदम से वो ट्यूबलाइट ऑन होनी शुरू होती है, हाँ अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है सब कुछ. So not to be avoiding, not to be ignorant कि भाई हम तो केमिस्ट हैं, हमने इससे क्या लेना देना. No, you have the advantage that the others don't have. You have the advantage that others don't have because you can actually look at from the chemistry lens and you can try to sense make. अब ये जो है मैंने आपको explain किया. A biologist will explain the same thing differently. Okay, वो enzymes break it down. But since most of you are chemists, I'm trying to tell you how to take advantage of your chemistry knowledge. Look at it. All it comes down to is, अगर वो absorb हो रहा है तो कैसे absorb हो रहा है? उसकी physiochemical properties. And you are a chemist. You can better understand than a biologist. उसकी physiochemical properties क्या है? Right? After all that is happening is small molecule versus large molecule. It's all chemistry. Right? So if you look at that, that is itself is a huge advantage as a chemist you have. So next time when you see these things, don't shy away and don't go, oh, bhai, ye kya pahad aa gaya? No, ye pahad nahi hai. You can easily make them a straight line. Agar pahad bhi hai to usko sapat sadak bana denge aap. It's very easy, but just don't shy away. Don't shy away. एक नहीं तो दो बार करना पड़ेगा, नहीं तो चार बार, नहीं तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा. But look from the chemistry lens. The lens of chemistry, if you start looking at these things will start to come, and then you'll say, aha, this is really not that difficult. It's really easy. We can really get to understand. ठीक है, पढ़ना पड़ेगा. मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ because I started many years ago and reading. But all I'm saying is, as a chemist, you have the advantage, which biologists don't have that. They have different advantage, but not the ones that you have as a chemist. So absorption, how it is absorbed, where it's absorbed, how it's absorbed, that plays, as you can see, an important role. Same way distribution, how it gets distributed. If it is getting distributed, as I was telling you yesterday, body, and I think I have a slide I'll bring to that, different parts of the body have different pH. So उसमें कितनी चीजें होंगी? Either your compound is stable, it will survive as is, or it will break down. So you have to understand that if it breaks down, it is not the active ingredient which is needed, which means stop. ये आगे compound काम नहीं करेगा. You need to change the structure of that. You design. That's how the drug discovery is done. Okay. If it passes through that, distribute करने के लिए, as I mentioned, from stomach में 2 pH, as goes up from 3.8 to 7, 8 pH, तो उसकी basicity बढ़ जाएगी. Is it soluble or not soluble? If it is not soluble, it will not go further, right? So solubility is important, and therefore different formulations. Now the reason I'm saying is all these things can now you connect to throughout the
throughout up until now what you have seen, if you have not asked those question, कि कुछ चीज़ें हैं वो कहते हैं जी ओरल ले लो, कुछ है जी इसमें मिला के ले लो, राइट? क्यों? सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबल ही नहीं होगा वो अंदर जाके बैठा रहेगा, उसका असर नहीं होगा, राइट? सो वेदर इट्स सॉल्युबल और नॉट, यू कैन अगेन केमिस्ट्री, राइट? इफ इज इट बायो अवेलेबल, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट विच इज नीडेड टू बी इफेक्टिव, उस फॉर्म में वो अवेलेबल है या नहीं है, अगेन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, अगेन केमिस्ट्री. So that understanding, so this is basically, look at this, why I put this down here. The researcher examines where the chemical travels to. When it's distributed, when it is passing through the travel route, in that route कौन कौन से उसको चीज़ें मिलेंगी, किस तरह के एंजाइम्स मिलेंगे, क्या पीएच होगा, जिस भी रूट से वो जा रहा है क्या एंजाइम्स हैं, क्या पीएच होगा, उसमें वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा मॉलिक्यूल, वो ब्रेक डाउन तो नहीं कर जाएगा, वो कितनी जल्दी से क्लियर होकर दूसरे रास्ते से नहीं चलेगा. सो यू सिंपली फॉलो दैट. सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, दैट्स व्हाट द रिसर्चर डज, कि वो केमिकल सर्वाइव करेगा उस कंडीशन में. दैट्स अगेन ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. सेम वे, सेम थिंग, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट, सेम वे मेटाबोलाइट बनेंगे या नहीं बनेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन के विच राउट इफ इट इज टेकिंग थ्रू. उसके अंदर लाइक इंटेस्टाइन हैज डिफरेंट एंजाइम्स कंपेयर टू लिवर, प्लाज्मा, डिफरेंट एंजाइम्स, उन एंजाइम्स का उसके ऊपर क्या असर होगा. अगेन व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक्स, राइट? सो उन एंजाइम्स का आपके मॉलिक्यूल के ऊपर, ड्रग के ऊपर क्या असर होगा, उसकी जो स्टडी है उसे समझना. सो मेटाबोलाइट बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो कि बनेंगे तो कौन से बनेंगे. इफ इट ब्रेक्स डाउन टू मेटाबोलाइट विच इज आल्सो एक्टिव, परफेक्टली फाइन. इफ इट्स नॉट, इफ इट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग विच इज नॉट एक्टिव, then okay, this is not the right drug, you change the structure. So that's why it takes 10 to 15 years to bring a good drug to the market. And then when all of this is done, how जो भी उसके side products बनते हैं, how they get clear from the body, the excretion part. So those things, now you can understand why all of these, the importance part, why this is important. Any question? Is what I'm talking making sense? Don't hesitate. Any question? Anything else you want to know? So many drugs, I gave you the simple properties, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, just based on the pharmacokinetics, just based on the ADME properties of the drugs. So now you can appreciate why ADME is an extremely important thing, because if you don't know those properties, a good drug cannot be designed, and even if a drug is designed, it will not be effective. And again, now in many cases, now it's a complex machinery. When the drugs are designed, let's say all of these things are good, but in some cases, in many cases that you hear that the drug still doesn't work in certain patients, or there is a side effect. So let me explain to you why that happens. So let's say if there is a drug for a person who has no other morbidity, no other complication, तो जैसा बताया theoretically it should work that way. Now imagine the same drug is given to, and again, how these things are effective, and usually in humans it should work, but if the same drug is given to a person who is already taking some other drugs, or is diabetic, or had blood pressure, or all those, उसके enzymes, उसका tension, उसका, क्योंकि अगर diabetic है तो glucose levels, insulin levels are different. Those may have, उनके enzymes are working slightly differently, and that has to be balanced with the drug for which intended drug is, right? So sometimes if those comorbidity of some other reason is happen, then the physician try to adjust that, कि आपने कब लेना है,
कौन सी दवाई के साथ में दूसरी दवाई लेनी है या नहीं लेनी, बिकॉज ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, द फार्माकोकिनेटिक्स ऑफ द वन ड्रग should not negatively influence the pharmacokinetic of the second drug. If it influences, उसका असर नहीं होगा. And then many times when you see, you go to the clinician कहता है कि ठीक है इस दवाई को इतने बजे लेना, फिर इतना गैप रखो, फिर दूसरी दवाई को इस समय लेना. So इसमें when next time when you hear that, घबराने की जरूरत नहीं है. Now as a chemist you can explain कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, right? कि उसे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि otherwise if you do not know that, बोले कि डॉक्टर कह रहे हो से मैंने मालूम नहीं क्यों कह रहे हो से, राइट. तो घबराने की जरूरत नहीं है. नाउ एज ए केमिस्ट यू कैन एक्सप्लेन व्हाई इट इज हैपनिंग, क्योंकि वो ड्रग का आपस में इंटरेक्शन ना हो और जो दोनों ड्रग का असर हो, सिर्फ इसीलिए वो कह रहे हैं. उसको भी ज़्यादा, दैट्स व्हाट दैट डॉक्टर इज ट्राइंग टू बैलेंस. सो एज ए केमिस्ट यू कैन सी देयर इज लॉट मोर अप्रिशिएशन. अब ड्रग या ये सब चीज़ों को सुनो, डर के भागने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट ओनली कह रहे आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों किया जा रहा है. इट्स सिंपली प्रॉपर्टीज, ड्रग की प्रॉपर्टीज हैं, ट्राइंग टू मैच एंड ट्राई टू एक्सप्लेन बॉडी के अंदर ही किस तरह से कौन सा ड्रग कब लेना है, क्यों लेना है, कितना लेना है, कितनी बार लेना है और कितने अल्टरनेट रूट पे लेना है. इट्स ऑल कम्स डाउन टू एडमी प्रॉपर्टीज. दैट्स ऑल देयर इज. ओके, so far look at, I'm emphasizing, I made my slides specifically keeping chemistry in focus, because most of you, if not all of you, have done more chemistry. But now look at that. It's all comes down to what is the molecular weight, how many hydrogen bond, is it lipophilic or lipophoric, what is the pHa, this is polar surface area, PSA, right? What is the pK, whether it's an acidic or basic when it breaks down to, right? Uski reactivity kya hai, shape, when I say shape, three-dimensional shape, because if you have a chiral center, right, you have two isoforms, उसकी shape क्या है, वो काम करता है नहीं करता है, और वो इतना अंदर जाके stable हो गए. As you can see, all of these are nothing but only chemistry. All I talked is just chemistry, because this is based of that is उसके physical, किस physical environment में जा रहा है. This is what I talk about. When I say physical environment, कौन से enzymes उसको interact करने वाले हैं, वो body उस पाथ के अंदर कौन कौन से proteins को वो target करने को जा रहा है, right? मगर देखो जर्नी यहाँ से शुरू होती है. It starts from here. So if it is not working, you bring back, you fix that. If it is not working, you bring back, you fix that. You keep on modifying, keep on optimizing. That is what is called hit to lead optimization. कि आपको initially जो hit मिले, आप उसको optimize कर रहे हैं. That's a very, assuming, have you guys heard the term hit to lead optimization in a drug? आपको initial hit मिले, आपने 10,000 कंपाउंड स्क्रीन किया, आपको 200 मिले. वो जो मैंने आपको यहाँ I showed you a picture, right? जो टारगेट दिखाया था कि वो जो एरो है ऊपर है, कि इनिशियली वो कुछ काम कर रहे हैं, अब आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए. एंड देन बेंग टू बुल साइज, एकदम सेंटर में लेके आने का. दैट्स बेसिकली ऑल. एंड देन क्लियरेंस पाथ क्या है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, बिकॉज दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन डोज कितना लेना, कितनी गोलियां लेनी, दिन में कितनी बार लेनी या नहीं लेनी, अल्टरनेटिव पे लेना, बायो अवेलेबल कितना वो अवेलेबल है, व्हाट इज द क्लियरेंस हाफ लाइफ. अगर 5 मेग लिया है और 5 मेग के अंदर उसका कई है, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग का स्ट्रक्चर ऐसे कि वो धीरे से रिजॉल्व होता है, मतलब कि वो प्लाज्मा और बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहेगा. सो यू वी टेक वंस अ डे, वो रहेगा उसमें धीरे धीरे रहेगा. देयर आर सम ड्रग्स, उसका कई ड्रग जो देते हैं उसका सिर्फ 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट ही होता है. वेरी चैलेंजिंग, बट दैट्स वेरी मोस्ट इफेक्टिव. देन डॉक्टर विल ट्राई टू फिगर आउट क्विकली उसको कैसे देना है. IV दो, फटाफट पहुंचा, उसने अपना काम किया, बजाय इसके कि पिल्स दी और आपको जी हर 1 घंटे में एक पिल लो. दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर. सो उसकी अगेन लीथल डोज क्या है, टॉक्सिसिटी, कि कितना जो डोज, जो लीथल डोज है उससे नीचे रखने का उसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उससे हाई कॉन्सेंट्रेशन पहुंचा, it will have some lethality, it will have some negative effect. So just to avoid, so see here, it's all chemistry, but actually it's drug discovery, it's drug development, it's making medicine, it's making therapies, it's making drugs. Any question?
You want to take a break? Okay, let's take a few minutes break and then we'll come back.